Sanju! He's got the jacket. Hey everyone, welcome back to Chat and Chat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Sanju. This is part 3, so if you missed part 1 or part 2, then you can go check it out. I always put the link to them in the description below. और अगर अब तक नहीं किया, subscribe करो, share करो, और like button पर थप्पड़ मारो. 452 दिन वो जेल में रहा. फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दे दी. पर उसके नाम के साथ एक शब्द जुड़ गया था. टेररिस्ट. दिल्ली में एक मीटिंग फिक्स हुई एक बहुत ही पावरफुल नेता के साथ. नमस्ते अंकल. बैठो. डैडी कैसे हैं? थोड़ा बुखार है अंकल. वेरी गुड. Oh, he's got a fever. It's very good. I don't think he's in his senses. आर्म्स एक्ट में जो सजा देनी है दो, लेकिन मेरे ऊपर ताड़ा लगा दिया है. अंकल आप ही सोचो, अगर मैं ये सब बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व होता तो मैं वापस इंडिया आता क्या? कोई दूसरे देश में असाइलम ले लेता. Jeez, he's senile. सो गया ब्रो. वॉल्यूम बढ़ा. अंकल मैंने गन रखी क्योंकि मुझे डर था कि हमारे घर मॉब अटैक होगा. It's so creepy when people sleep with their eyes open. बाबू, संजू का है? सर प्रीव्यू थिएटर में गए. So, if they were really his, wouldn't he have tried to contact someone to get rid of those too? The RDX, or was it a plant? कोर्ट में ये कहना होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी थी. कमलेश, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ. Who's the bald man? कहाँ जा रहे तू? FBI ने मेरे ऑफिस पे रेड डाला है. तो क्यों? अभी वो तेरे और मेरे लिंक को इन्वेस्टिगेट करेंगे. टेरर चार्जेस को बहुत सीरियसली लेते हैं वो लोग. सॉरी यार, मेरी वजह से ये सब. उस दिन मैंने पहली बार संजू से झूठ बोला. मैं एक टेररिस्ट का दोस्त बन सकता हूँ. मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो जाए फिर भी दोस्त रह सकता हूँ, पर एक टेररिस्ट के साथ दोस्ती? आई एम सॉरी बट मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ. आज भी जब दारू पीता हूँ तो साले की बहुत याद आती है. फोन करने का मन करता है और फिर मैं इसको देखता हूँ और खुद को याद दिलाता हूँ कि इसके घर पे RDX ट्रक था. टेररिस्ट है साला ये. विनी का मेल है. कहाँ गायब हो गई है? अमेरिका. कह रही किताब नहीं लिखेगी. आज संजय दत्त ने सरेंडर किया क्योंकि उनकी मोहलत के 30 दिन समाप्त हुए. पलटिए. झुकिए. जोर से. It just doesn't add up. Because his dad was basically doing humanitarian aid for the Muslim community that was being. संजू की कहानी छोड़ के आपने म्यूजियम्स पे किताब लिख दी. म्यूजियम्स झूठ नहीं बोलते. संजू भी झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन आपने दूसरों की तरह अखबार के खबर को ज्यादा अहमियत दे दी. वो चाहता है कि आप ये रिकॉर्डिंग सुने. बड़ी मुश्किल से निकलवाया. योर कॉफी. मेरा नंबर. ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी. Pretty confident. 400 साल पहले अखबार नहीं थे, खबरें जबानी फैलती थी. फिर किसी ने पहला अखबार छापा, शुरू हुआ खबरें बेचने का धंधा. इन सब में लगी हुई है रेस. सब चाहते कि जनता उनकी सुने, क्योंकि जनता जिधर को जाएगी उधर विज्ञापनों से कमाई आएगी. At the end of the day, news outlets are business and they're there to make money. आपका अखबार कितने पन्नों का है? 24? 8 कर दीजिए. सर, फिर पन्ने भरने के लिए खबरें मैन्युफैक्चर नहीं करनी पड़ेगी. That was a good line. आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है. कोर्ट में आप कहेंगे कि ये कंफर्म न्यूज थोड़ी है, ये तो अंदाज है. ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है. बंडू दादा का फंक्शन और मैं नहीं आऊं. आप डेट बोलो दादा, मैं पहुंच जाऊंगा. गणपति विसर्जन के दिन 8 बजे आ जाना. ओके दादा, डन डन डन. आपका बेटा बेल पे है, फिर भी अंडरवर्ल्ड के साथ बातें करता है. पुलिस के पास 60 घंटे की फोन रिकॉर्डिंग है. काम में फोकस नहीं है. पिछली 12 फिल्में फ्लॉप है. उसका जेल जाना तय है. मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता. आपकी भविष्यवाणी में गलत साबित करके दिखाऊंगा. आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ. मिलेंगे एक दिन. And we know that's the truth. And it's not even just newspapers there, it's newspapers and news venues around the world. अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना.
मेरा कौन सा दोस्त है अंडरवर्ल्ड में डैड? बंडू दादा उसके घर पे विसर्जन पे जा रहा है ना। लोगों से कौन पंगा लेगा डैड, इसलिए दोस्ती बना के रखता हूँ। मत जा पुत्र। तो आप अपने प्रेस से कहिए मुझे वो जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दिलवा दे, नहीं जाऊंगा मैं। How do you even fall into the ranks with them in the first place? Yeah, I don't know these gangsters, but I assume they're the local equivalent of the mob. जब मैं आपकी माँ से शादी करने वाला था ना पुत्र, उन दिनों एक डॉन थे मस्तान। वो नाराज हो गए कि नरगिस तो हम मुसलमानों की शान है, कोई हिंदू उससे शादी करेगा तो उसे काट देंगे। तो मैंने उनको फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मीटिंग तय हुई रात को 1 बजे। यहाँ अकेले आए थे? मेरा उस्ताद मेरे साथ था। कौन सा उस्ताद? साहिर लुधियानवी। मस्तान के आने के 1 घंटे पहले मैं यहाँ आ गया। तो साहिर साहब का गाना मेरे जहन में मैं घुमाता रहा, और वो जब आए मैंने उनसे कहा मैं नरगिस जी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, अगर आपको ये गलत लगता है तो मुझे गोली मार दीजिए, और अगर सही लगता है तो गले लगा लीजिए। Wow. और जब शादी हुई तो जो सबसे बड़ा गुलदस्ता आया था वो मस्तान का था। Man, he's got some courage. कल जा और बंडू दादा की फाड़ दे, वो कभी फोन नहीं करेगा। दादा मैं विसर्जन पे नहीं आ पाऊंगा। तो चढ़ा गया है क्या? अरे अनाउंसमेंट हो गया है। हाय बाबा आ रहे कोल्हापुर से। मेरी भी फैमिली है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप गोली चला दो दादा और खत्म कर दो चैप्टर। दादा समझो मेरी बात, मैं विसर्जन पे आऊंगा तो खबर छपेगी संजू अंडरवर्ल्ड भाई भाई। नहीं आऊंगा तो भी छापेंगे संजू विसर्जन पे नहीं आया, अंडरवर्ल्ड ने गोली मार दिया। कुछ भी करूंगा छापेंगे। पर ये दूसरी खबर पढ़ के ना मेरा बाप शर्मिंदा नहीं होगा। रोएगा, वो बहुत रोएगा, लेकिन जब मेरे फोटो पे हार चढ़ाएगा ना तो उसका सर ऊंचा रहेगा, दुनिया के सामने झुकेगा नहीं। That's a great way to put it. Oh, he's on top of the world. His dad's a smart man. You should listen to him more often. हमारा फैमिली का परंपरा है गणपति का 10 दिन नो मर्डर। सोचा विसर्जन के बाद तेरे को ठोक दूंगा। आज गणपति बप्पा से मैं तेरे लिए दुआ मांगा। उनको बोला मैं आदमी बहुत डेयरिंग है, दुनिया से अलग है, थोड़ा हेल्प करो, उनका केस भी निपटा दो। बप्पा बोला बंडू डन, ले प्रसाद ले। Oh my God, that was a turn. में रहना। Stay in touch. Oh jeez. बाबा किधर है यार? तू शॉर्ट रेडी है? अरे बहुत ट्रैफिक है, हाईवे पे अटका हूँ। बाबा मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है। लगता है आपको उस्ताद नंबर 2 से मिलाना ही पड़ेगा। ये उस्ताद आपको काम की रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। सनराइज का शॉट अगर सनसेट को देता रहा ना तो एक दिन करियर का सनसेट हो जाएगा। ये देखो डैड, बेवड़ा बादशाह, मवाली मकसूद, मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS, ये पढ़ी? हाँ पढ़ी ना डैड। हाँ पढ़ी। क्या स्टोरी है? Liar. एक हॉस्पिटल होता है, हाँ हॉस्पिटल, उसमें एक पेशेंट का मर्डर होता है रोज, और फिर उसकी वो किडनी विडनी गायब होता है डैड। Did his dad write it? मैंने जो पढ़ी है पुत्र, उसमें तो एक भी मर्डर नहीं है। आपने क्यों पढ़ी है? आपके बाप का रोल कर रहा हूँ इस फिल्म में। Yeah. 12 साल के बाद डैड ने ये फिल्म सिर्फ इसलिए साइन की थी कि मेरे साथ रहकर मुझे डिसिप्लिन सिखा सके। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? डैड के साथ काम करने से येरवाड़ा जेल में रहना ज्यादा आसान था। पर एक सीन हमेशा याद रहेगा, वो जादू की झप्पी वाला। तू हमेशा अपनी माँ को झप्पी देता रहा, और बाप की हसरत भी पूरी कर दे। Still gives goosebumps, man. जब डायरेक्टर ने कट बोला तो ना मैंने सुना ना डैड ने। हम दोनों रियल में रोए उस दिन। अरसों बाद बाप बेटे गले जो मिले थे। And the award for the best actor male in a comic role
goes to, of course, Sanjay Dutt for Munna Bhai MBBS. Oh, and the dude, the newspaper dude is there, seeing him. He's like, see? Not finished. मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार खुशी से रोए थे हमारे प्रीव्यू थिएटर में। उस दिन किसी अखबार ने छापा था कि मेरे घर में एक RDX ट्रक पार्क था। She needs to find out what that meeting was about, because he only heard. कोर्ट में ये कहना होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। Were they practicing a scene? एक कॉन्सुलेट के इवेंट पे डैड चीफ गेस्ट थे। तुम लोग तो कभी मेरी तारीफ करते नहीं हो, इसलिए मुझे चीफ गेस्ट बनना पड़ता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनकी तारीफ उनका बेटा करने वाला है। मैंने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट किया कि इंट्रोडक्शन स्पीच मैं दूंगा। आज किसी पेपर में छापा है कि लास्ट सस्पेक्ट टू अटेंड डिप्लोमेटिक इवेंट। एम्बेसी से फोन शुरू हो गया, वो आपका नाम गेस्ट लिस्ट से हटाना चाहते थे। हमने कहा इनवाइट करके कैंसिल नहीं कर सकते, पीछे बिठा देंगे, डिप्लोमेट से दूर रखेंगे। That might be the best solution for everybody. Please try and cooperate, sir. I think that's the actor that he held over the balcony in Lage Raho, Munabai. Remember he stormed into the office and then kind of beat him up, held him over the balcony? I think it's the same guy. मैं तेरे सामने ही बैठा हूँ, थे ही सुना दे स्पीच। मुझे सबको सुनाना था। They had no right to deny me that. इग्नोर करना सिख पुत्र ऐसे लोगों को। कल आपकी गाड़ी में हम उस्ताद नंबर 3 का गाना लगा देते, आनंद बख्शी। वो आपको ऐसे इंसल्टिंग लोगों से लड़ना सिखाएगा, ठीक है? His dad would have probably liked to read that. काश उस रात मैंने वो स्पीच डैड को सुना दी होती, क्योंकि अगली सुबह डैड उठे ही नहीं। You never know. That's why they say do it in the moment, because you just never know. आज मैं बहुत मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। डैड को थैंक यू बोलने का काम। पहले कभी बोल नहीं पाया क्योंकि शब्द ही नहीं मिला। जो इन्होंने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए हर शब्द छोटा लगता है। 1981, एक तरफ अस्पताल में पड़ी बीवी, दूसरी तरफ के नशे में पड़ा बेटा। डैड ने दोनों जंग लड़ी अकेले। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इनकी वजह से। आपका मुझसे कोई बेहतर बेटा होना चाहिए था, जो आपका सहारा बनता, ना ही कि मेरी तरह आपको बेसहारा करता, जो अपनी ईमानदारी के लिए नाम कमाता, अपनी बेईमानी के लिए नहीं। वो दूसरा बेटा आपसे कभी उतना प्यार नहीं कर पाता जितना आपके नालायक बेटे ने किया। कभी कह नहीं पाया, पर you're my hero, Dad. आप मेरी जान हो, Dad. Love you, पुत्र। Everything I've read about his father, Sunil Dutt, is a pretty awesome guy. मुझे टाडा से बरी कर दिया गया। गन रखने के जुर्म में मुझे आर्म्स एक्ट में 6 साल की सजा दी गई। जज ने क्लियरली कहा कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं। पर अगली सुबह किसी अखबार ने नहीं कहा कि संजय दत्त इज नॉट अ टेररिस्ट। सबने कहा संजय दत्त गेट्स 6 years इन द ब्लास्ट केस। डैड मुझे सिखाना चाहते थे कि मैं अपमान, इंसल्ट्स को कैसे नजरअंदाज करूं। वो चले गए और उनका तीसरा उस्ताद एक रहस्य बन के रह गया। Oh, bummer. Oh, dang. Never heard it? Yeah. चलता हूं, कल फिर हाजिर होगा आपका अपना संजू बाबा। So those charges were never confirmed. Like, was it just a fake news the next day because that newspaper guy felt embarrassed? Yeah. And so put that in the paper instead? हाँ, तुमने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा था कि जिस दिन RDX की न्यूज छपी थी, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि दत्त साहब खुशी से रोए थे। कमलेश की कहानी अलग है। वो जब तुमसे प्रीव्यू थिएटर में मिलने आया था, तो दत्त साहब तुमसे कह रहे थे टू कन्फेस इन कोर्ट कि तुम्हें बॉम्ब ब्लास्ट की जानकारी थी। They're reading a script. कमली को इधर लेके आओ। मुझे बता दो। नहीं, मैं उस कमीने को खुद बताऊंगा डायरेक्टली।
परमिशन नहीं मिलेगी। मैं खुद बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ। हमारे रेडियो स्टेशन में एक एफएम माइक है। अगर आप कार जेल की दीवार के पास ले आओगे तो आपका कार का रेडियो इसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा। कमलेश नहीं आएगा। उसको बोलो 6 जून को बुलाया 11 बजे। 6 June? 6 जून दत्त साहब का बर्थडे है। साला इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। I think you're right. It was probably a script how he reacted. आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। मेरा सबसे अजीज दोस्त था कमली। अच्छा इंसान था, पर बेचारा का शिकार हो गया। नहीं, मैं वो नशे वाले की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो है जो हर सुबह दरवाजों की दरारों से हमारे घर के अंदर सरकाए जाते हैं। Newspapers. ये का नाम है समाचार। ये टीवी पे भी बेचे जाते हैं। उन दिनों एक खबर छपी थी, RDX ट्रक एट दत्त हाउस। ये सरासर झूठी खबर थी। जब राइड्स हो रहे थे, डैड का रिलीफ मटेरियल का एक ट्रक कुछ दिन हमारे घर पार्क था। किसी ने अफवाह फैला दी कि उसमें RDX था और एक जर्नलिस्ट ने एक चटपटी खबर छाप दी। आज भी मेरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकाल के पढ़ लो, मुझ पे RDX का चार्ज है ही नहीं। कमली को मुझ में टेररिस्ट दिखने लगा। 11 साल की दोस्ती पर फुल स्टॉप लगा के चला गया। साले ने यह भी नहीं देखा कि हेडलाइन के एंड पे एक क्वेश्चन मार्क था। उस दिन डैड एक वकील और कुछ पेपर्स लेके मेरे पास आए। क्या है अंकल? तुम्हारी आजादी का टिकट है, ये साइन करो और अप्रूवर बन जाओ। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा? वो तो अब भी बोल रहे हैं। एक साइन से ये झूठ को सर्च कर दूं? अंकल मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कंट्री छोड़ देना। अपने बाप के माथे पे लिख दूं टेररिस्ट का बाप और खुद कटलू कीनिया। पूरी उम्र जो इज्जत कमाई वो एक साइन से खत्म। मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन, यहां से कट ले। तू दुनिया का बेस्ट लॉयर होगा, पर टूटी हुई नाक लेके कोर्ट जाएगा ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। पहली बार मेरा बाप फख्र से रोए, उस दिन मैं उसका हीरो था। पर उसी दिन मैं अपने दोस्त की नजरों में जीरो हो गया। हे कमली, पता नहीं मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही है कि नहीं। हाँ। जब जेल से बाहर आऊं तो एक बार मिलने आ जाना यार। और याद रखूंगा, अपने दोस्त से मिलने के लिए उसने अपनी पहली गाड़ी छोड़ के प्लेन का टिकट खरीद लिया था। एक हमने बाल सफेद हो रहे हैं यार। एक्सपायरी डेट से पहले एक बार गले लगा ले। Oh, must be his release date. Long time coming. Needs a haircut. Definitely needs a haircut. Oh, he's got like a rat tail going on. संजू! He's got the jacket. Yeah. That's a lot of years to waste on a misunderstanding. Yeah, a lot of times that's what happens. तुम्हारे उस्ताद नंबर 3 का गाना I've cracked it. किताब का टाइटल वही है। मैंने भी ढूंढ लिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। पापा ये क्या है? स्टोरी है आपके बाप की और मेरे बाप की। किसी दिन पढ़ना और मेरे बाप जैसा बनना, अपने बाप जैसा नहीं। Sound advice. तेरे बेटे की शकल बिल्कुल दत्त साहब से मिलती है। I'm sure वो तो वापस आ गए। ऐसा लगता है। Oh, tell me we're gonna get a number with Ranbir and Sanjay. Breaking news. Baba attempts to sign in the car.
Kimaki. Yep. Not worth it. Not worth it. Come on. How did you like it? I You still have teary Yeah, eyes. Your yeah. eyes are all wet. Yeah. Yeah, father and son Yeah. sort of thing. Yeah. I liked it. I liked it. Ton of different ideas. But yeah, it was good. If I just step back from it and not look at it as his autobiography or an attempt at an autobiography, through the whole entire story, I think it's a great example of just how people miscommunicate with each other and accept truth from poor sources or information sources and so forth, and how it just destroys individuals, families, cultures, all sorts of things. So I really liked that aspect a lot, and I think definitely that's still true today. And with the whole AI thing and so forth, it's even more so. Oh, for sure. So I think you could walk away with that really important message. You make a really good point because it is. So the controversy over this film is whether or not he told a truth, right? But whether you believe that this movie made him look better than he was, or if you believe this, the truth of the matter of this movie, if you just take it for a story as it is you were right. You made a really good point. It had a good message. Whether you believe this is based on reality or not, is the message was sound. You can't just take like these Bits and words, snippets for it, and then try to put your own, like a story together. You need to learn like to look into it yourself and all that, and all these miscommunications and misconceptions about stories and on the news outlets and all that sort of stuff, because they are out there to make money. Like that's the whole thing about all the news organizations. Yes, they're trying to bring news for sure, but then there are some, like, I'm not going to name the channel, but they are not classified as a news source. They literally, for tax purposes, they are classified as an entertainment, as an entertainment channel. Right. And and it's that's how they view it, is for entertainment. Right. And like if you turn that channel on and you watch it, you're like, well, this is ridiculous. Yeah. None of this is real. Yeah. And it's like it just takes a little bit of time to look into it to find out that it's fake. Right. So- And I mean, I always laugh because, when I was growing up, I always, as a kid, you go through the supermarket and you'd be the checkout, and they always had the newspapers that would have like the tabloids that would have, and they'd have all sorts of things. Alien baby found on roadside, and they're still out there, and they have these pictures that at the time as a kid, I'd look at them and go, that can't possibly exist. And you, of course, my eye was captivated by it and caught it. But at the end, I'm like going, that can't possibly be true. This just can't possibly be true. So-and-so is on their deathbed. And it's like going, just saw them on the news yesterday. How and many they looked actors? good. How many actors has that happened to? Where it's like went viral that they died, like Zach Braff from Scrubs. Right. He was one of them that fell prey to this. That everyone was like, Zach Braff is dead. It got so bad that his mom started like mourning him and started freaking out. Yeah. And it was like this big deal. And he's like, what are you talking? Like, what the hell? I'm totally alive. Totally alive and kicking. And I like the point you made. Imagine how much worse this would have been if this was all like nowadays. Because the AI, you're right, you brought up a good point. AI is getting to a point where you could really make a realistic image and even video now. And then I think the other really interesting theme that was running through relationships, and how sometimes we don't communicate well in our relationships. And him and his father, they were they worked together, yet they weren't working together on a personal level. Newfound friend in the world that was sent by the universe to really help him, to basically make a plea to his dad on his behalf, to say, look, he's struggling so hard, and he can't even verbalize what he's needing to say. And the fact that he couldn't, his speech, he wasn't able to verbalize it
up to that point in his life and then his father passed before he could actually verbalize it. Just shows how their relationship had an interesting barrier in it. We're telling false news to others sometimes. That's an interesting way to look at it. Because we want to control the narrative of what our lives are. And in a sense, he's trying to control the narrative of everything that happened in his life up to that point. So, like the newspaper, they want to say a narrative, and here they're each wanting to say a narrative to each other. And sometimes, in his case, his narrative was terrible. He's like, and I'm not taking any responsibility. It's the whole situations around me, and it's other people's problems. The things that happened to him, those are tough for anybody. So I definitely could see how things can get twisted and life can be rough. You don't have to do a drug series in your life to have a good life. You can have a great life from the get-go. You just got to be open to it and just make the right choices. Well, it's really when he started focusing on who's important in his life, his mom, listening to her tapes on repeat, and... That was another thing. I loved the whole thing about that they had these songs, these key songs that were, what did he call them? The masters. The masters. He had all these masters. His mom was a master for him, and he didn't even know that. But yeah, his dad and the masters, I think, was really great. And the movie was entertaining. Like we said in the beginning, just take a step back, look at it for the story that it was, you know, and that it is based on real events. And, you know, like in the beginning said, that there were some fictionalizations that occurred. But yeah, so what would you rate it? I'll give this an 8. I liked it. Going to give it, we don't do halves. So you can't eat a half a pani puri. No, you can't. So I will also give it an 8 because, yeah, I thought this was up there. The acting was really good. Ranbir, of course, anything I've ever seen with him, he's never disappointed me in his acting skills. I really think, I mean, a lot of people call him one of those nepo baby, like nepotism and stuff, but I mean, he has the chops. I mean, even in this movie, Sunil Dutt, Paresh Rawal's character, said, "You're born into this and you have an easier way into the industry than thousands and millions of other people, right?" But I think there are some people like Ranbir Kapoor that would have been an actor that even if his family wasn't family, because I think he is an amazing actor, whether that's because of genes or, you know, that he's been around it his whole life. I don't know. What I do know is I enjoyed watching him in this performance and other performances with him. And Paresh Rawal, oh my gosh, man, he plays the dad so I just want to give him a hug. He needs a hug. Like, I wanted to give him that magic hug. Like, and he played that so well. I forgot so many times that it was Paresh Rawal while watching this. Like, throughout the movie, I forgot it was him so many times because I was just like, I saw him as Sanjay Dutt's dad, like, through the whole thing. And I'm just like, oh man, you're so sweet and innocent and such a good guy. All right, guys, well, let us know what you thought of the movie in the comments. Tell us as well what you guys would rate it. I'm very interested in knowing what your ratings are. If you haven't already, please be sure to subscribe. And if you like this video, you want to see more videos like these, then also hit the bell icon so you can be notified whenever we drop more of these videos in the future. Still crying a little bit, sorry. और like button पर tap पर मारो.